माइटोकॉन्ड्रिया रे जन डीएनए अछि तो म्यूटेशन रो चांसेस बहुत अधिक रहे म्यूटेशन माने काना जे हमर डीएनए रो सीक्वेंस रे चेंजेस हबा डीएनए रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस हबा राइट तो डीएनए रो स्ट्रक्चर रे चेंज हे गेला सीक्वेंस रे जदी चेंज हे गेला तो सेनो जन फीचर्स देखबार के मिलु छै ताकि हमें क्वेश्चन म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंजेस के क्वाजे से काम लिखि सडनली जदी हमर डीएनए रो कैंसी भी जगह रे चेंज हे गेला ताकि हमें काना क्वेश्चन म्यूटेशन बोली करी क्वेश्चन तो म्यूटेशन रो रेट ता बहुत अधिक है केनो दैट इज इन केस फॉर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया रो डीएनए रो म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रिया रो डीएनए रे चेंजेस हबार चांसेस बहुत अधिक रहउची एज कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियर डीएनए कंपैरिजन रे माइटोकॉन्ड्रिया रो डीएनए रे चेंजेस हबार चांसेस बहुत अधिक अछि म्यूटेशन हबार बहुत अधिक चांसेस क्वेश्चन असबा जे एज कंपेयर टू योर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड योर न्यूक्लियर डीएनए व्हिच डीएनए हैव द मोर चांसेस ऑफ हैविंग योर म्यूटेशन that is in case of your mitochondrial DNA केनो जो chances আছে mitochondrial DNA रे क्वेश्चन आसी पारे okay but why mitochondrial DNA have more chances of your mutation because mitochondrial DNA रे there is absence of introns देखो इंट्रॉन नहीं थे mitochondrial DNA रे इंट्रॉन माने काना जतेला हम DNA देखु सपोज धरि न दिस वन दैट इज योर DNA रो सब part involve नाइ रहन protein synthesis every part of the DNA they are not coding for the protein रो लागि information सब part रे नाइ protein रो लागि जेन part रे information अच्छे suppose this part have the information for the protein this part have the information for the protein this part have the information for the protein जेन part रे information अच्छे ताके क्वेश्चन में काम बोली करी एक्सॉन ताके हमें काना क्वेश्चन एक्सॉन बोली करी क्वेश्चन ऑर्डर लिखली ई बट जिन पार्ट रे इंफॉर्मेशन नाइ न से पार्ट के कहला ई पार्ट रे इंफॉर्मेशन नाइ न ताके हमें कहला इंट्रॉन्स ओके दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड ओके तो हमर नॉर्मल न्यूक्लियर डीएनए जितेले देखमा न्यूक्लियस रे जन डीएनए अछि तनो एक्सॉन इंट्रॉन प्रेजेंट एक्सॉन कैन लाइक रेस्पोंसिबल दैट इज रेस्पोंसिबल फॉर द okay and intron that is not responsible for the protein this is not responsible for protein रो लगे से responsible नो है ये नो है से intron टा नो है exon is only responsible for the protein तो माइटोकॉन्ड्रिया रो डीएनए जतेले देखमा exon intron एंड किछि प्रेजेंट नाही there is no introns total senu kana present ache only exons present ache only exons present ache kahar case re mitochondrial DNA dekho nuclear DNA रे exon intron present ache जति माइटोकॉन्ड्रिया जदि हमर न्यूक्लियस रो डीएनए रे जदि कैंसी भी जागा रे माने कर धरिना इंट्रॉन जागा रे किछि इंट्रॉन रे जदि चेंज हला बेला हमर जन प्रोटीन बनवा से प्रोटीन रे किछि फरक नाही ओके कैंसी भी जागा रे चेंजेस हला एंड इंट्रॉन माने बहुत सारा अछि से इंट्रॉन जति चेंजेस हला किछि फरक नाही जन प्रोटीन बनवा कथा से प्रोटीन बन बट माइटोकॉन्ड्रिया जन डीएनए अछि ओके सपोज देयर इज दिस वन दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इनो तो एक्सॉन 9 इनो कैंसी भी जागा रे देखो मैं नाही कहबार जे न्यूक्लियर डीएनए रे म्यूटेशन नाइ होइटा नै न्यूक्लियस रे डीएनए रे जदी म्यूटेशन हैला इनो जदी म्यूटेशन हुए एक्सॉन रे जदी म्यूटेशन हैला देन ओनली चेंजेस हवा ओके बट इंट्रॉन रे जदी किछि म्यूटेशन हुए तो किछि फरक नाइ पड़े हेति चेंजेस जोना बिकॉज़ इंट्रॉन कैन नॉट मेक द प्रोटीन बट एक्सॉन रे खाली जदी चेंजेस हवा देन ओनली म्यूटेशन ता धरा पड़बा म्यूटेशन ता जना पड़बा चेंजेस जना पड़बा बट इंट्रॉन रे चेंजेस हला जना नाही बट हम माइटोकॉन्ड्रिया जतेले देखमा टोटल टा काना है एक्सॉन है टोटल टा एक्सॉन है माने कैंसी भी जागा रे जदी म्यूटेशन हुए ई जागा रे भी म्यूटेशन हला तो चेंजेस हवा ओके ई जागा रे म्यूटेशन हला चेंजेस तक पर के मिल
म्यूटेशन सब जगह रे कैंसी भी जगह रे यदि म्यूटेशन हुए कैंसी भी जगह रे यदि डीएनए रो चेंज हुए तो सेनो प्रोटीन टा फॉर्मेशन नहीं हे पारे प्रोटीन रो फॉर्मेशन रो प्रॉब्लम ओके सो as there is no entrance in the mitochondrial DNA रे entrance नहीं ना intron माने काना introns are the non coding part they do not code for the protein okay so like the silent area in a message साइलेंट एरिया के क्वेश्चन में इंट्रॉन बोली के क्वेश्चन बिकॉज़ से काना नहीं बनाबर प्रोटीन बनाबर इंफॉर्मेशन नहीं रखी व्हाई आर द इंपोर्टेंट इंट्रॉन रो इंपोर्टेंट काना इन न्यूक्लियर डीएनए जेतल रखमा इवन इफ ए म्यूटेशन हैपन देयर जते न्यूक्लियर डीएनए रे इंट्रॉन रे जति किछि हमर म्यूटेशन हुए दैट डज नॉट अफेक्ट द इंपोर्टेंट पार्ट से किसी भी इंपोर्टेंट पार्ट के इफेक्ट नहीं पके बिकॉज़ इंट्रॉन इज नॉट कोडिंग फॉर द इंट्रॉन रे जदी म्यूटेशन हुए किसी भी फर्क नहीं पड़े बिकॉज़ दैट इज नॉट कोडिंग फॉर द राइट व्हाट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रे काना होचे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डज नॉट हैव इंट्रॉन्स तार पके इंट्रॉन से नहीं नो इफ ए म्यूटेशन हैपन जदी कैंसी भी जगह रे म्यूटेशन हला इट डायरेक्टली हिट्स द यूजफुल वर्किंग पार्ट ऑफ द जीन तो सब पार्ट वर्किंग पार्ट है सब पार्ट एक्सन है सब पार्ट वर्किंग पार्ट माने काना सब पार्ट रो प्रोटीन तैयारी होছে तो किसी भी जगह रे म्यूटेशन हला संग संग प्रॉब्लम देखबा कौन चेंजेस देखो बट हमर यूकैरियोटिक सेल ला कि न्यूक्लियस रो डीएनए रहला न्यूक्लियस रो डीएनए रे हमर काना देखबार के मिलबा न्यूक्लियर डीएनए रे किसी भी जगह रे जदी चेंजेस हला माने इंट्रॉन रे जदी चेंजेस हला किछि फरक नहीं पड़े एक्सन रे चेंजेस हला जेकरी फरक पड़ा म्यूटेशन का जना पड़े okay so more harmful effects that will form even small mutation जदी छोटिया म्यूटेशन जदी भी हला तो harmful effect देखबार के मिलबा that will be the result of the mutation in mitochondria okay question asba जे why mitochondrial DNA have more rate of mutation काहेले जे more rate of mutation रहला गुटे कारण देखला जे mitochondrial DNA रे इंट्रॉन्स ही नहीं थे सब पार्ट एक्सॉन है सब पार्ट एवरी जीन दैट आर इंपोर्टेंट but amar nuclear DNA रे किछि part that are introns किछि part exon intron that is non coding part exon is your coding part यदि exon part रे changes हुए mutation जना पड़बा intron part रे mutation हुए किछि जना नहीं पड़े ध्यान पड़े problem है कि देखबार okay but in case of your mitochondria every part that is the functional part if any can be small changes हुए so small changes can lead to your mutation okay तापर असला another important factor जिनथर लगी से नंबर mitochondrial DNA रे म्यूटेशन रो रेट अधिक है that is no histone protein in mitochondrial DNA रे histone protein नाही histone protein माने का जमे जेतबेले न्यूक्लियस रो डीएनए देखला न्यूक्लियस रो डीएनए टा कहार द्वारा रैपिंग हितिसी histone protein द्वारा इटा जदी histone protein हला डीएनए टा आसिकरी कहार अराउंड रे कॉइल दिस हिस्टोन प्रोटीन अराउंड रे द कॉइल अनदर हिस्टोन प्रोटीन अछि के बार बार रिपीटेडली हमर डीएनए टा कहार अराउंड रे कॉइल अछि हिस्टोन प्रोटीन अराउंड तो देखो हमर न जते बेले देखमा जे हमर इन केस ऑफ योर हिस्टोन प्रोटीन इटा हला हमर काना दिस वन दैट इज योर हिस्टोन प्रोटीन काना करूचे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के गुटे टाइप रो काना करतल रखि छु कवर करके रखि छु ओके तो हिस्टोन प्रोटीन डैमेज हबार नु बचो से कहा के डीएनए के बचो बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज नो हिस्टोन प्रोटीन सो इट इज एक्सपोज्ड इजी टू डैमेज देखो हमर जते बेला न्यूक्लियर डीएनए देखमा न्यूक्लियर डीएनए टा काना हितसी दैट इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन अराउंड रे कॉइल्ड हितसी सो दैट डीएनए टा के प्रोटेक्शन दोछि के दैट इज योर हिस्टोन बट माइटोकॉन्ड्रिया रो जे डीएनए छै दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड so that easily damage our chances hoche the mitochondrial DNA is more likely to get damaged and mutated damage our chances okay then asala another one the mitochondrial DNA less effective repair system in mitochondrial DNA रो repair system बहुत less effective है देखो हमर जतले सेल रो DNA होचे DNA रो रिपेयर सिस्टम से निजर ओन DNA के से रिपेयर करि परसी चेंजेस जदी होचे तके रिपेयर करि परसी okay so our cell have the repair system that find and fix the broken DNA रे कैसे भी जागा रे जदी प्रॉब्लम थिबा सेते के से
पाइबा सेताके फाइंड करि पारबा सेताके खोजी पारबा और सेताके फिक्स भी करि पारबा चेंज भी करि पारबा ओके सो न्यूक्लियर डीएनए हैज द स्ट्रांग एंड कॉम्प्लेक्स रिपेयरिंग मैकेनिज्म न्यूक्लियर डीएनए रो अछि स्ट्रांग मैकेनिज्म अछि रिपेयर मैकेनिज्म okay so what about the mitochondria but mitochondria have very limited dna repair system they cannot fix any many type of your mutation जदि बहुत mutation हला सेटा के से करी नाही पारे mitochondrial dna right also the mitochondria are the powerhouse mitochondria के हमें क्वेश्चन powerhouse of the cell तो सेनु काना जनरेट हेसी एनर्जी जनरेट हेसी but also create free radicals जाके क्वेश्चन हमें ROS reactive oxygen species बोली करी क्वेश्चन ଯେତେବେଳେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପାୱାର ହାଉସ ଅଫ ଦ ସେଲ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ସେନୁ କାଣା ତିଆରି ହେଉଛି ROS that is your reactive oxygen species ଦେଖ ऑक्सीजन तो यूज होचे ଯେତେବେଳେ ଆମର एनर्जी जनरेशन होचे रेस्पिरेशन प्रोसेस टाइम रे हमें जेतेले ब्रीथिंग करूछु ब्रीथिंग कला टाइम रे ऑक्सीजन जेन ऑक्सीजन गला से ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन करबा लागि हेल्प कला बट किछि ऑक्सीजन they become reactive ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛ ଯେମିତି କି H2O2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ पेरोक्साइड फॉर्मेशन ଯେଲେ କି କହୁଛୁ ଆମେ କାମ लिखली that is your ROS reactive oxygen species बोली करी कहूছো these reactive oxygen species they can attack the DNA के माने अटैक करी करी माने म्यूटेशन करबार चांसेस inside the mitochondria okay so mitochondrial DNA not only get more damage but also fails to repair it properly डैमेज तो हबार चांसेस होचे बट से रिपेयर भी करी नहीं पारे प्रॉपर्ली दैट लीड्स टू हाई म्यूटेशन लागी बोली कि अधिका म्यूटेशन ओके इडा गला हमर काना so why mitochondrial DNA have the more rate of chances of mutation more rate of chances कहले जे म्यूटेशन ओके इडा गला म्यूटेशन रो चांसेस